Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to continue a new chapter, chapter number 13, Direct and Inverse Proportions. Chapter number 13, Direct and Inverse Proportion. Now, let's start. Mohan prepares tea for himself and his sister. He used 30 ml of water, 2 spoon of sugar, 1 spoon of tea leaves and 50 ml of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make a tea for 5 persons? मोहन चाय बना रहा है अपने और अपनी सिस्टर के लिए, और इसके लिए इसने 300 ml पानी, 2 स्पून शुगर, 1 स्पून टी लीव्स और 50 ml मिल्क का यूज़ किया। अगर जो इसे 5 लोगों के लिए चाय बनानी हो तो इस तरह से इन सारे मटेरियल्स में इसे किस तरह से यूज़ करना होगा। एक दूसरा क्वेश्चन, इफ़ 2 स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट्स टू अरेंज द चेयर फॉर एन असेंबली। 2 स्टूडेंट्स को असेंबली के चेयर अरेंज करने में 20 मिनट लगते हैं, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब। अगर जो 5 स्टूडेंट्स को असेंबली चेयर अरेंज करने में लगा दिया जाए तो कितना वक्त लगेगा। वी कम अक्रॉस मैनी सच सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ। कुछ इसी तरह की सिचुएशंस हमारे रोजिंदा जीवन में देखने को मिलती हैं, वेयर वी नीड टू सी वेरियस इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन अ वेरियस इन द अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, if the number of the articles purchased increase, the total cost also increase। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम परचेस कर रहे हैं वो इंक्रीज होंगे, इसके साथ टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। जैसे व्हीकल्स की स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे, इसके साथ टाइम टेकन जो होगा इसे डिस्टेंस को कवर करने में ये डिक्रीज होता जाएगा। फॉर अ गिवन जॉब, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। किसी भी जॉब के अंदर जैसे वर्करों की संख्या इंक्रीज होगी तो लेस विल बी द टाइम टेकन, तो वर्क कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा वो कम हो जाएगा। So observe that change in one quantity leads to change in the other quantity। तो इन सारे एग्जाम्पलों में हमने देखा कि कोई एक क्वांटिटी के चेंज होने के साथ ये दूसरी क्वांटिटी को भी चेंज करती है। राइट 5 more situations where change in one quantity leads to the change in another quantity। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं और रिमेंबर करने हैं। ओके, how do we find out the quantity of each item needed by Mohan, or the time 5 students take to complete the job? To answer such a question, we now study some concept of variation। तो मोहन को 5 व्यक्तियों के लिए चाय बनाने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे क्वांटिटीज़ के, या फिर 5 स्टूडेंट साथ में मिलकर जब असेंबली हॉल में चेयर अरेंज करेंगे तो कितना वक्त लगेगा। ऐसे आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 18 रुपीज, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द 3 kg। अगर 1 kg शुगर मतलब चीनी बाजार से लाते हैं तो 18 रुपीज़ कॉस्ट पर केजी पड़ता है, तो 3 kgs के लिए कितना लगेगा। फ़ौरन हम आंसर दे सकेंगे 18 3 ज़ा 54 रुपीज़। सिमिलरली वी कैन फाइंड द 5 kg और 8 kg ऑफ शुगर, स्टडी बाय द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसी तरह से अगर जो 5 kgs की बात करेंगे तो 18 5 ज़ा 90 रुपीज़, और 8 kg की बात करेंगे तो 18 8 ज़ा 144 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा। ओके,
ऑब्जर्व दैट द वेट ऑफ द शुगर इंक्रीज, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो इस टेबल्स के द्वारा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ द शुगर इंक्रीज हुआ, मतलब कि वेट ऑफ द शुगर इंक्रीज हुआ, इसी के साथ कॉस्ट ऑफ द शुगर भी इंक्रीज होता जाएगा इन सच अ मैनर दैट देयर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। और इस मैनर में यहाँ पर वेट ऑफ द शुगर इंक्रीज देन ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट। इस मैनर में इन दोनों के बीच का रेशियो है ये रिमेन कांस्टेंट बना रहेगा। सो टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज द कार यूज 4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। हाउ फार विल इट ट्रैवल यूजिंग द 12 लीटर्स? आंसर है 180 किलोमीटर्स। हाउ डिड वी कैलकुलेट इट? किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस पेट्रोल कंज्यूम इन द सेकंड इंस्टेंस is 12 liter, 3 times of 4 liter. The distance traveled will also be 3 times of 60 kilometer. In other words, when the petrol consumptions become threefold, the distance traveled is also threefold the previous one. So let consumptions of the petrol be x liter and the corresponding distance traveled be y kilometer. Now complete the following table. Petrol in liters, if we consume the 4 liter, then distance cover is 60 kilometer. If we consume the petrol 8 liters, then we cover distance is 120 kilometer. सेम मैनर्स में अगर जो 12 लीटर पेट्रोल का यूज़ किया तो 63 ज़ा 180 किलोमीटर हम कवर करेंगे। 15 लीटर्स का अगर जो हमने यूज़ किया तो हम 240, 20 लीटर्स का अगर जो हमने यूज़ किया तो हम 300 किलोमीटर्स कवर करेंगे। और ठीक इसी तरह से इस गिनती को हम आगे बढ़ा सकते हैं 25 लीटर्स तक। सो वी फाइंड दैट as the value of x increase, value of y also increase in such a way that the ratio x by y does not change. तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और इस तरह से कि रेशियो x अपॉन y चेंज न हो, इट रिमेन्स द कांस्टेंट and its constant says k. So in the case it is 1/15 is the ratio. We say that x and y are in direct proportion if x upon y is equal to k or x is equal to ky. We say that x and y are in a direct proportion if x upon y is equal to k or x is equal to ky. In this example, 4/16 is equal to 12/180, where 4 and 12 are the quantities of the petrol consumed in liters x and 60 and 180 are a distance y in kilometer. So when x and y are in direct proportion, we can write here x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x and y of the x respectively. The consumptions of the petrol and the distance traveled by a car in the case of the direct proportion. Similarly, the total amount spent and the number of articles purchased is also an example of the direct proportion. Think of a few more examples for the direct proportion. Check whether Mohan in the initial example will take 750 ml of water, 5 spoon of sugar, 2.5 spoon of tea leaves and 125 ml of milk to prepare the tea for 5 persons. So let's try to understand further the concept of the direct proportion through the following activities. Activities आपके स्क्रीन पर, do this. पहली activity, take a clock and fix its minute hand at 12. Record the angle turned through the minute hand from its original position and the time that has passed in the following table. So time passed t in a minutes, angle turn a in a degree, and then taken the ratio t upon a.
So first T1 is equal to 15, A1 is equal to 19. The ratio is 15 by 19 is equal to 1 by 6. Second 30 by 180, ratio is once again 1 by 6. 45 by 270, once again ratio is 1 by 6, and 60 divided by 360, ratio is 1 by 6. So what do you observe that about T and A? Do they increase together? Is T upon A same every time? Is the angle turned through by the minute hand directly proportional to the time that has passed? Yes. From the above table, you can also see T1 is to T2 equal to A1 is to E2, because T1 is to T2 is equal to 15 is to 30 equal to 1 is to 2. Then A1 is to A2 is equal to 90 is to 180 equal to 1 is to 2. And check this, T2 is to T3 equal to A2 is to A3, and T3 is equal to T4 equal to A3 is equal to A4. You can repeat this activity by choosing your own time interval. Second, ask your friend to fill the following table and find the ratio of his age to the corresponding age of his mother. Friend's age and mother's age, and then find the ratio F upon M. Age 5 years ago, present age, and age after 5 years. So what do you observe here? Do F and M increase or decrease together? Is F upon M same every time? No. You can repeat this activity with other friends and write down your observation. Thus, variable increases or decreases together need not always be in the direct proportion. For example, physical changes in a human beings occur with the time but not necessary in the predetermined ratio. Second, change in the weight and height among individuals are not in any non-proportion, and there is no direct relationship or ratio between the height of the tree and the number of leaves growing on its branches. Think so more similar examples. तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात ये कर रहे थे कि वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के एग्जाम्पल नहीं हो सकते. जैसे कि फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने बात की. ह्यूमन बीइंग्स अकर विद द टाइम बट नॉट नेसेसरी इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो. ठीक है, इसी तरह से हाइट और वेट में जो इंडिविजुअली चेंज होता है ये एनी नॉन रेशियो नहीं मिल सकता, आर नॉट इन एनी नॉन रेशियो. और ठीक इसी तरह से नो डायरेक्ट रिलेशन और रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द ट्री एंड नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग इन इट्स ब्रांच. तो हाइट ऑफ द ट्री और नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग इन द ब्रांच, इन दोनों के बीच में भी इस तरह से रेशियो या फिर रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते. इसी बारे में कुछ और एग्जाम्पल के साथ सोचेंगे, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे एक्सप्लेनिंग रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 को लेकर. तब तक के लिए आपका धन्यवाद करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.